Hey guys, what is up? So in today's video, I'm going to be sharing with you an important lesson that I've learned after spending lakhs of rupees across different coaching programs, courses, masterminds, mentorship programs online on the internet, not just in India, all over the globe. I started my digital marketing journey since 2015, so you can imagine how much money I would have spent just to upskill myself. Roughly been a decade now. And whatever I'm going to be sharing with you is like, in this video particularly, is an important lesson. It's a factor that contributes to the success in advertising. So if you're running ads, Facebook ads for yourself or your clients, you want to grow your business, you want to get a lot of customers, you want to generate a lot of leads, you want to make a lot of money, this video is going to be very important. And I've been sharing a lot of different strategies in regards to frameworks like कि कैंपेन कैसे लॉन्च करना है, एड सेट कैसे लॉन्च करना है, कितनी एड्स टेस्ट करो, different level of understanding and learning that I've tried to pass on to you through my videos in the previous videos. In this video, I'm going to be talking about that one factor that I feel is one of the most important factor that contributes to the success in advertising for any business. So whether you do it for yourself or your clients, this video is going to be one of the most important videos for you. And if it doesn't make sense to you today, as a well-wisher, I want to request you save this video because one day it is going to make sense. So the factor that contributes to the success that I want to share with you today in this video is the niche, the market. And the reason why I say that is because a lot of times, like I have done this several times where we have started ad accounts from zero. And आज की डेट में बात करूं, so we are managing roughly about 2 lakhs per week in ad spend. Meta ads ही करते हैं हम primarily, and 2 lakhs per week हम across the portfolio of clients we are managing it, and our clients are getting results. Of course, their business is growing. That's why they keep spending on ads, of course, right? Common sense. So that all is amazing. But I'll tell you that campaign structures and ad launch frameworks, अगर वो ही सिर्फ एक contributor होता success का advertising में, तो everybody would have been rich and wealthy and make a lot of money, and फिर agencies, हम जैसी agencies exist ही नहीं करती, right? And the reason why I say that today and I choose to talk about this today is I'll be lying if I tell you that सिर्फ campaign structures ही contribute करते हैं success में. Advertising success में सबसे पहला ingredient जो मैं देखता हूँ जो एडवर्टाइजिंग सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है आपकी नीश, आपकी मार्केट. सो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा. दैट वन ऑफ दोज थिंग्स दैट पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद व्हेन इट कम्स टू पोजीशनिंग देमसेल्व्स इन अ कंपैरेटिव मार्केट प्लेस इज दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज अ माइक्रो नीश, राइट? माइक्रो नीश क्या करें, कौन सी नीश चूज करें, पोजिशनिंग कैसे करें. सो द वे आई लाइक टू लुक एट इट इज step number 1 is look at the problem you're solving. As basic as it sounds, but I want you to watch this video till the end because I'm telling you it is one of the most important videos, and most of you probably are not going to understand this or the importance of this and probably will skip watching this video. So don't do that. If you trust me, just don't do that. So number 1 factor is the problem you are solving, right? Now when you look at the problem you are solving, to measure if that problem is good enough for you to choose to solve, to decide that, you want to look at the problem from 2 different perspectives, okay? Number 1 is how burning that problem is, and number 2, how big enough of problem is that. So इसका मतलब ये है कि कितनी ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है, कि उसको कितनी ज्यादा जल्दी कोई या कितने ज्यादा डेस्परेटली कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, कितनी बिग प्रॉब्लम है, मींस कि कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, कितने ज्यादा लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं. ये पहला स्टेप होता है टू डिसाइड ऑन योर नीश एंड योर मार्केट. माइक्रो नीश वाली लर्निंग जो भी आपने अभी तक ली है, कहीं से भी ली है, एक बार के लिए उसको just park that out somewhere and just look at marketing and advertising and business building from this understanding and psychological understanding that I'm sharing with you today, right? So problem, how burning is that problem and how big enough of problem is it, that the one that you're trying to solve. And the reason why I say that is because some time ago abhi bhi aata rehta, like a lot of people reach out to me for the advertising support that they want us to take over their ad accounts and scale their business. But
9 or 10 times I reject the applications, and the reason I'll tell you why I do that. The reason is, मैं honestly share कर रहा हूँ कि उनके जो products होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब there is no sense in selling those products. Like I'll tell you, I'll explain this to you. एक बार हमें किसी ने रीच आउट किया, वो टावल्स सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, ओके. अब उन्होंने एक थीम पकड़ी टावल सेल करने की, विच इज some Japanese और कोरियन कार्टून बेस्ड थीम, राइट. एंड बोला कि उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे. अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी ऐसा बिजनेस करूंगा ही नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स इसमें आ ही नहीं सकता है ऑनलाइन. एडवर्टाइजिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, फॉर इज नॉट द फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस इन सच केस सिनारियोस. व्हाई? बिकॉज द मार्केट एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग आफ्टर, दैट in itself is like there's no substantial amount of scalability scope here. And the reason I say that, why do I say that, is because प्रॉब्लम ऐसी चीज है जो वो सॉल्व कर रहे हैं, टावल, जो कोई भी कभी भी, मतलब कोई इतनी बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है. अगर टावल नहीं भी मिलेगा आपका ऑनलाइन, तो कोई जाके कभी भी खरीद लेगा, कहीं से भी खरीद लेगा, एग्जिस्टिंग घर की चीजें यूज कर लेगा. सो जब प्रॉब्लम ही बड़ी नहीं है, बर्निंग नहीं है, तो कितनी भी बड़ी हो वो नहीं चलती. दैट इज द रीजन व्हाई I told you in the beginning that you have to look at the problem from two different perspectives. And आज का वीडियो मोस्टली उसी लर्निंग के बारे में मैं आपको, मतलब एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ अपने एड अकाउंट्स के बारे में. I'll give you some examples, more examples, but it's about the problem. That's the step one. And fortunately or unfortunately, I want to tell you that people who don't get results from advertising, उनका step one ही broken है. Problem itself that they are choosing to address, that's where the problem is, right? And why I say that is because अगर किसी को ये समझ आता है that problem has to be big enough, तो वो big enough problem में ही, कि it's so big enough problem, उसी चीज में ही अटक के वहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं कि टॉवल्स फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी है, एवरी हाउस होल्ड वुड रिक्वायर दैट, एवरी हॉस्पिटल वुड रिक्वायर दैट, एवरी होटल इज गोना रिक्वायर दैट. सो बिग इनफ प्रॉब्लम देख लेते हैं, राइट, डिमांड की कितनी बड़ी मार्केट है, लेकिन बर्निंग प्रॉब्लम है कि नहीं है वो नहीं देखते. अब द मोमेंट यू स्विच योर perspective and you look at it that okay, still if I have to sell towels, तो अगर मैं वो किसी कंज्यूमर को सेल करूं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, से फेसबुक एड्स के थ्रू, तो वो शायद एक बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर सेम चीज मैं किसी होटल को सप्लाई करूं, तो शायद वो बर्निंग प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पे यूजेज ऑफ टॉवल्स बहुत ज्यादा होता है. So maybe if I choose to target the right market, the right potential business or the right potential audience, then suddenly मेरा जो प्रॉब्लम, जो बर्निंग नहीं दिख रही थी, वो एकदम से थोड़ी सी बर्निंग दिखने लगी. Which brings me to the second point. So once you understand the problem you are solving, that how burning that problem is and how big enough of that problem is, once you understand that really well, the second thing for you to now look at is the market you choose to talk to, because there will be people who are going to require something that you're selling, like a B2C model, right, like business to consumer, and there will be sometimes situations where you would want to not serve B2C but instead go B2B. That's right, sometimes you got to do that, and this is what will can potentially change the trajectory of your business, like your entire the performance of your business, and can help you meet your business goals. Because if you choose to address the right market with the right idea and with the right product, then also you can get phenomenal results. But then again, the moment you decide that and you understand that, then comes the third step of which channel would you choose to advertise on? Are you going to use meta ads? Because if you're serving to B2B, so say for example, if I am a manufacturer of towels, and I want to now serve and solve this problem for, say, wholesalers. I have a manufacturing unit now, a manufacturing plant, and I want to now sell to wholesalers at a very thin margin and sell in bulk quantity, because then they can move my product more, right? So, but I cannot probably find a lot of wholesalers who will be interested to take the stuff from me on Facebook.
might not be possible. Then I'll look at different locations where I can find these wholesalers and supply them as a manufacturer that, hey, I'm going to give this stuff to you and please start selling my stuff. And these are wholesalers, so they can move the product like pretty fast in huge quantities. And that's how you decide like what kind of advertising efforts you need to apply, which advertising channel do you need to apply your efforts to. This is what contributes to, like, this is one of the most important factors in advertising success, guys. I cannot stress enough on it. And ऐसा कितनी बार हुआ है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. हमारे पास एक क्लाइंट आया, उनका जो आया क्या, हमने देख रहा था उनका अकाउंट जब हमने स्टार्ट किया उनका. उन्होंने पहले जब एड्स रन करी थी तो उनका जो कॉस्ट पर परचेज था वो अप्रॉक्सीमेटली 800 जा रहा था. ओके, हमने उसको 2 महीने के अंदर 200 के अराउंड ले आए कॉस्ट पर परचेज को. 100 रुपीज का क्वालिफाइंग प्रोडक्ट था. सो वो फनल ऐसी थी कि उनको एक लीड कलेक्ट करनी थी, लेकिन शी वांटेड टू क्वालिफाई द लीड. शी डिड नॉट वांट टू गेट अ फ्री लोडर. शी वांटेड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाज कि बस वो पे करने, मतलब बर्निंग इनफ होना चाहिए. और उसको हम कैसे, हाउ आर वी judging that if the problem is burning enough from the market's perspective is by seeing if that person is willing to pay something, right? So अलग-अलग strategies होती हैं. One of the strategies है funnel strategy. तो हमने ये deploy कर दिया strategy and उनका cost 2 महीने में 800 cost per purchase से around 200 आ गया. अब ये कैसे हुआ? ये हुआ यही understanding से. Step number 1, the problem you're solving. Now she was trying to solve a problem which is, I asked her, okay, what problem are you willing to solve or you want to solve? And she's like, I want to help people with increasing their salaries or getting a better job. And I was like, okay, so that's the problem, but how are you going to solve it? What is the vehicle? प्रॉब्लम एक चीज होती है, उसको सॉल्व किस तरह से करोगे वो दूसरी चीज होती है, राइट? जैसे अगर मैं टॉवल सेल करता हूं तो ये प्रॉब्लम है, मैं टॉवल्स बना के, टॉवल इज मेरा व्हीकल, बट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ? प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा हूँ कि जब कोई नहा के आएगा तो उसको अपने आप को, अपनी बॉडी को सुखाना होगा, ड्राई करना होगा, पहुंचना होगा, तो उसके लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. इसीलिए वो मॉडल थोड़ा ब्रेक हो जाता है. नाउ गेटिंग इट. नाउ इसके सिनारियो में देखो, दूसरी इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग एग्जांपल है, और उन्होंने बोला कि आई एम गोना हेल्प पीपल गेट अ बेटर जॉब, हायर सैलरीज. एंड देन आई आस्क, ओके, दैट्स द प्रॉब्लम, ग्रेट, बट सो इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, probably big enough also, but how are you going to solve it? That's the second step, right? What is going to be the model, to understand the model? And she told me that through communication skills. And I said, then now comes the step where we need to realize that अगर हम communication skills से better job के लिए बोल रहे हैं, तो market में इस vehicle की acceptance क्या है कि अगर ये problem मैं solve करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं इस व्हीकल के थ्रू, इस मेथड के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू, तो क्या मार्केट उस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी है कि ये जो चीज है वो इस चीज में हेल्प कर सकती है? अगर मार्केट रेडी है, ओनली देन दिस इज गोइंग टू मेक सेंस. अंडरस्टूड? अगर नहीं रेडी है, देन आई एम गोइंग टू चेंज थिंग्स अराउंड. सो हियर्स व्हाट वी डिड. I told her that this is not what you should be doing, because your vehicle is about communication skills. So you should actually position yourself as a communication expert. So you should try to help people who are not good at communication. Because burning enough problem है, लेकिन उनके लिए है जो communicate नहीं कर पा रहे. If you're going to try to tell people that, hey, you want better salary, I'm going to help you get better salary or double your salary with the help of communication, improving communication skills, then no. Because अगर किसी से आपने point of conversation, जो starting point है आपका conversation का, if that starting point is, hey, I'm going to double your salary, then the person who is going to get attracted towards it is going to be that person who is just struggling to get a better job. So that person is trying to look out for other solutions. For example, hiring a recruiting firm. For example, going to people who can do his or her CV better. You see what I'm saying? और या फिर वो दूसरी या बेटर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं जॉब. कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी प्रॉब्लम है, ये तो वो सोच भी नहीं रहे होंगे. एंड शी इज लाइक, मेकिंग सेंस. देन आई टोल्ड हर, स्टार्ट पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ कम्युनिकेशन स्किल थिंग, राइट? वी कैन क्रिएट अ यूनिक प्रोसेस फॉर यू एंड हाउ टू पोजिशन योरसेल्फ यूनिकली इन द मार्केट प्लेस. बट ओनली वंस वी डू दैट, you can start to get an influx of leads coming your way, and then all of a sudden you will realize that once you get these people, some percentage of those people will be those people who would want to better their communication skills because they want to get a better job or lead a happy life. He's like, okay, we did that, success. That's the importance of understanding the problem you're solving, how big enough of that problem is,
and if that problem is big enough or big enough of a problem or not, if that problem is burning enough or not, and then how are you choosing to solve it? Is there any kind of acceptance from the market's point of view? These are the things that contribute. And फिर market क्या है कि आप B2B जा रहे हो, B2C जा रहे हो. जैसे अगर इसी example में बोलूं, अगर she was choosing to follow the same process that I told you, like same problem, and wanted to increase salary for people, then probably it would have been a different way of positioning it, right? Communication skills and vehicle नहीं होता, फिर कुछ और तरीका होता, फिर salary negotiation होता, interview cracking skills होता. You see what I'm saying? That's where people get confused. And if you're that somebody who is still struggling with your advertising results and you're not getting results from Facebook ads, I can tell you that I've taken ad accounts from zero to like spending in 6 figures, and I want you to know 7 figures also. And I want you to know this, that maybe it's not just about advertising, the campaign structures and the कि कौन सा बटन, सीक्रेट बटन प्रेस करना है, कौन सा ऑडियंस इंटरेस्ट मुझे चूज करना है. Maybe it's not about that. Maybe it's about business building foundation. Maybe it's about understanding that which business are you trying, like what kind of business are you trying to build, which problem are you solving, who are you solving it for. और मैं आपको ये बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, because I've spent lakhs of rupees on mentorship programs, coaching programs, masterminds in India. I'll tell you, there was a moment when I had booked a new car for myself, and I swear this is reality. My inner circle students know it, my clients know it, because they have seen the proof. मैंने कार बुक करी थी अपनी, एंड मैंने वो कार कैंसिल कर दी थी बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन अ मास्टरमाइंड. सो आई सैक्रिफाइस्ड ऑन माय want just because I wanted to upskill myself. And I'm telling you this from my experience of doing everything, that the reason why there is so much of problem, why people don't realize it, why there is a confusion in people in micro niche, problem you solve, business building, why? Because whatever they are learning from different places, these people they are learning from mostly comes from, like, everybody who is teaching things is coming from international markets. So जैसे मैंने कोई इंटरनेशनल मार्केट से कुछ सीखा और मैंने यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करके सिखा दिया, राइट? अब कुछ लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफी लोग नहीं भी हैं, अनफॉर्चुनेटली. अब उससे क्या होता है कि अब मार्केट की, समझो कि मैंने यूएस से कुछ सीखा, राइट? और वहां की मार्केट ज्यादा सैचुरेटेड है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, तो वहां और ज्यादा अवेयर है, उनको पता है कि स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, कितना ज्यादा. एक छोटी से छोटी दुकान वाले को भी पता होगा, वहां पे एक शॉपकीपर को भी पता होगा स्कोप क्या है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का. तो मुझे उनको इस चीज पे अवेयर करना, एजुकेट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है. हाउएवर, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट माइक्रो नीश का और आई गो नैनो नीश, राइट, अगर मैं इंडिया में अप्लाई करता हूं एट दिस पॉइंट इन टाइम, विच मीन्स अगस्त 2024, वो शायद काम नहीं करेगा, बिकॉज अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ही नहीं है कितनी जगहों पे, जिसका मतलब कि इंडिया थोड़ा अभी पीछे है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन वी स्टार्ट टू लुक एट द एंटायर गेम ऑफ माइक्रो niching and micro positioning and nano positioning in India, sometimes it works, but most of times it doesn't work for people. I have lost so much of money trying to nail this, and I used to wonder कि यार मुझे results क्यों नहीं आ रहे. And that's what I found out कि यार ये problem ये है कि जो कोई भी सिखा रहा है उसमें गलती नहीं है, but वो अभी market में फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज अवेयरनेस इतना लो है, सोफिस्टिकेशन इतना लो है. दैट इज द रीजन व्हाई. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक टू ऑलवेज लुक एट starting from step 1, which is not deciding on your niche or micro niche, but actually talking about the problem you want to solve, because every business solves a problem, and I would not want to solve a problem which is not burning enough and which is not big enough. अगर बर्निंग इनफ प्रॉब्लम है एंड बिग इनफ प्रॉब्लम है, तभी मैं उसको सॉल्व करने का सोचूंगा. अदरवाइज मैं सोचूंगा नहीं, बिकॉज बिजनेस बिल्ड होगा नहीं. एज सून एज आई स्टार्ट टू स्केल द बिजनेस, यूनिट इकोनॉमिक्स आर गोना ब्रेक, बिकॉज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज गोना राइज, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी हटता चला जाएगा. और फिर क्या करूंगा ऐसा बिजनेस करके जहां पे पैसा ही नहीं बन रहा, राइट? सो इफ दिस वीडियो हेल्प्ड, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, and this was one of the most important videos, and I promise you that if you save this video and you revisit this a few times, sooner or later you will build something profitable, and your ads will start to give results, because you might switch the way you say things in your ads, or reposition your product in a different manner, just because I shared this psychological principle with you. I hope this video helps. I'm going to see you in the next one. Have a good day. Bye.